The next and fourth property, fourth elastic constant is the Poisson's ratio. Very much important. Okay, बहुत घुमाया जाता है, कई बार confuse करता है, and pretty interesting topic. Okay, so what is interesting about this one? So basically, when we are stretching or when we are trying to elongate or compress some member, okay, so obviously when I'm trying to elongate this one, then the length will increase. But what happened to the lateral dimensions? Means what happened the diameter in this case? So obviously by our senses, जब हम senses की बात करें, so obviously when it's gonna elongate, in that case the diameter gonna decrease here. So what about the volume? Okay, so if the length is gonna increase, diameter is gonna decrease here. So let's suppose the initial volume is V here. So what do you think, after the elongation, when the length increases and diameter decreases, the final volume will be same of the initial volume or not? Okay, now this confusion जो आपका माइंड में कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, this confusion can be easily clarified by the using the Poisson's ratio. So you can say here that is the Poisson's ratio is basically used to calculate the lateral strain. Okay, or you can say it is also used to calculate the volumetric strain, because when we are using the definition of volumetric strain, जब हम बात करते हैं volumetric strain क्या, I told you that is volumetric strain we define epsilon V, it's simply epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. Okay, in this case this is longitudinal strain, and these two terms are lateral strain. So if you have information about the longitudinal strain but you have no information about the lateral strain, then you can't find out the volumetric strain. So basically we'll use the Poisson's ratio to find out the volumetric strain. So how can you define the Poisson's ratio? So you can say as per the Hooke's law, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. ओके यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया आपके पास में, बट वी विल सी कि यहाँ पे इफेक्ट जो यहाँ पे आना चाहिए. सो आई एम सेइंग दैट इज एज पर द हुक्स लॉ, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. Now, but let's check here. When we are trying to elongate this one, in that case the length is going to increase, length increase करेगी, but in this case the diameter is going to decrease here. Means both the longitudinal and lateral strains are opposite in nature. Means if one is positive, the another one will be negative. Means अगर एक में increase हो रहा है तो डेफिनेटली उस केस में जो दूसरे वाला है उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो मीन्स यहां पे एक मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं, वो भी आपको नोट करना है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड lateral strain are opposite in nature. That is, if one is positive, another one will be negative. Okay, so when we are using the Hooke's law and when we are providing a statement that is longitudinal lateral strains are directly proportional to longitudinal strain, and after this one, if I'm introducing a proportionality constant, that is mu here, mu times of longitudinal strain, then when we write the mu here, then we will use mode, then we use the negative sign, divide by longitudinal strain. Okay, this is how we will use the mu or Poisson's ratio. Here I am using the mode and I am using a negative sign. This negative sign completely indicate the opposite behavior of longitudinal and lateral strain. ये इसके opposite behavior को indicate करता है. Okay, तो ये ध्यान रखना आपके पास में Hooke's law के थ्रू definition ये गिवन है. But when you are writing this one, then in that case you have to use this type of system.
Okay, so now हमें पता लगे what is the Poisson's ratio, and this is simply the ratio of this one. This is also indicated by 1 by small m in some books. Okay, so this is the definition. But how can we utilize and how this value is gonna different for the different cases? So actually, okay, I'm in that space. Hope कि आपने वो note लिख लिया हो. So I'm saying, अब यहाँ पे हमारे पास काफी अच्छे points हैं. There are few good points here that you have to mark all the points. So I'm saying that is mu values vary from 0 to 0.5. Okay, this is the variation of mu. ये mu की variation है. अभी हमें काफी कुछ बताएगी. Like for cork, mu is 0. Now for the cork material, okay, mu is 0. It means आपने देखा भी होगा, शायद आपके फिल्मों में देखा होगा, शैंपेन बोटल्स आर यूज टू फॉर द जो नेक कैपिंग आपके पास में नेक की जो कैप यूज करती है, दैट इज वी आर यूजिंग द कॉर्क हियर. हम कॉर्क यूज करते हैं. ओके, सो व्हाई वी आर यूजिंग कॉर्क नॉट द अदर मटेरियल? बिकॉज व्हेन वी आर सेइंग म्यू इज 0, देन व्हाट इज द सेंस इन दैट केस? ठीक है, उसमें क्या सेंस होगा? सो इन दिस केस व्हेन वी आर सेइंग दैट इज म्यू इज 0, इन दैट केस डेफिनेटली वी आर सेइंग आइदर लेटरल स्ट्रेन आर 0 और longitudinal strain are infinity. ठीक है, तो मीन्स या तो ये 0 या infinite है. So obviously this can't be infinity, so this will be 0 here. So means in this case we are saying that is, it means lateral strain is 0. Okay, so if lateral strain is 0, it means what? It means if let's suppose this is the cork material and I'm trying to elongate this one. अगर मैं इसको elongate कर रहा हूँ, in that case there is elongation हो गया आपके पास में, but there is no lateral strain. Diameter में कोई भी change नहीं होने वाला. This is the property of cork material. Okay, that is for the cork material, lateral strain is 0, longitudinal strain is not 0, is not 0. Okay, longitudinal strain 0 नहीं होंगे. That's why जो पैकिंग की जाती है आपके इसमें नेक को पैक करने के लिए, इफ यू ट्राई टू रिमूव द कॉर्क बाय एक्सपेंडिंग दिस वन, आप उसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश करें, इट विल नेवर कम आउट, बिकॉज वो जब बाहर कब आएगी? जब आपका इसमें डायमीटर कम होगा. बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट, इन दैट केस द लेंथ इज गोना इंक्रीज बट डायमीटर इज नॉट गोना चेंज. दैट्स व्हाई यू रिक्वायर्ड स्क्रू ओपनर फॉर दिस वन. ठीक है, कि आप पूरी उसको बाहर निकालें, बिकॉज इन दैट केस द डायमीटर इज नॉट गोना change here. So when the mu is 0, in that case lateral strain is 0 but longitudinal strain is not 0. What about volumetric strain? Okay, volumetric strain के लिए क्या होगा? So you can say volumetric strain that we define epsilon v, that is simply epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, and this is 0 and this is 0, means lateral strain are 0. In that case, the volumetric strain will be directly equals to the longitudinal strain. It means you can say volumetric strain is not 0. Okay. In this case, the volumetric strain will be exactly equals to the longitudinal strain. जो भी वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी आपके पास में? That value will be exactly equals to the longitudinal strain. वो इसके exactly equal होने वाली है. Okay, so for the cork material we are defining mu is 0. So when the mu is 0, then we are defining this definition here कि उस केस में क्या क्या possibilities हो सकती है. So on this one MSQs बनाए जा सकते हैं, MCQs बनाए जा सकते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि what happening when mu is 0 for some material, उस केस में क्या होने वाला है. Okay, then मैं स्पेस को यूज कर रहा हूँ. We'll see the more properties here. Okay. Next, I'm saying, तो मैंने आपको बताया पहले for the cork mu is 0 here. Okay. Then I'm saying for concrete, mu varies from 0.1 to 0.2. Okay. This is the variation for the concrete material. As you can see here, the mu value is for the concrete is from 0.1 to 0.2. It means, let's suppose if you are considering 0.15. Okay, so means for the cork, when we are saying the mu is 0.15, then we know that the lateral strain is mu times of longitudinal strain. Then you can say lateral
strain will be 0.15 times of longitudinal strain. Okay, negatively मान लेते हैं. We are using the concrete. हम concrete use क्यों करते हैं? Because the compressive strength of the concrete is very much better. I'm not talking about the tensile strength. Okay, the compressive strength of the concrete is very much better. जितनी भी स्काई स्क्रैपर्स अभी बन रही हैं, ठीक है, उनके बनने के पीछे दो ही लॉजिक हैं, दो मेन इन्वेंशंस हैं जिनकी वजह से आज स्काई स्क्रैपर्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, कैन यू थिंक अबाउट दिस वन कि कौन कौन से दो इन्वेंशंस होंगे? सो एक तो आपको समझ में आ गया कंक्रीट. ओके, देयर इज अ कंक्रीट हियर, क्योंकि लेट्स सपोज कि आप एक स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं स्टोन से. सो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज वेरी मच लेस. आपने देखा होगा पिरामिड्स. सो टू गिव दिस मच ऑफ हाइट, इतनी हाइट, पिरामिड की हाइट के इक्वल हाइट देने के लिए we require this much of height. In that case the base requirement will be higher. Okay, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, in case of stone आपको बेस भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि इतना लोड बेयर कर सके, because there is less compressive strength. That's why for the pyramids the base is so much used to maintain that height. तो अगर आप स्टोन से स्काई स्क्रैपर बनाने की ट्राई करेंगे then definitely you have to increase the base. पर हमारी सिटीज में इतना स्पेस नहीं है. That's why we invented concrete. Okay, and the compressive strength of the concrete is very much better. You can see here. That is, if you are applying a load on the concrete, ठीक है, आपका इसमें compressive load आ रहा है, then the change in the width, okay, the change in the width of the concrete due to the compression will be only 15% of that load. जो load है उसका बस क्या होगा, 15% ही चेंज आएगा. The compressive strength of the concrete is better one. Okay, तो पहला इन्वेंशन क्या था? Concrete. What about second invention? Second invention ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्काई स्क्रैपर आपके पास में पॉसिबल हो पाई? That is lift. ठीक है, लिफ्ट. ठीक है, मीन्स अगर आप इतनी ऊंची बिल्डिंग बना भी लें और आपको अगर सीढ़ियों से उस पर जाना पड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहेगा. तो द सेकंड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेंशन फॉर द यू कैन से स्काई स्क्रैपर्स वाज द लिफ्टिंग सिस्टम. ठीक है, कि आपने लिफ्ट बनाई ताकि आप वहां पे जा भी सकें. So there are two basic inventions. Okay, so I told you that is the compressive strength of the concrete is very much better. That is varying from 0.1 to 0.1 से लेके 0.2 तक वेरी कर रही है. Then for metals, the value of mu varies from 0.25 to 0.33. Okay, this is for the metals. So I told you that is, let's suppose if I want to try to elongate this one, then length is going to increase. इसकी length increase करेगी, then obviously diameter is going to decrease here. तो मैंने आपसे पूछा the volume will remain same or not? Initial volume will be same or not? So you can see the values here. Means in this case the lateral strain is that I'm taking the initial value 0.25 times of longitudinal strain. Okay, it means if there is a change in length is 1, अगर length में change आपके पास में 1 हुआ, in that case the change in diameter will be only 0.25, उसका 25% ही होगा. It means decrease in diameter is not compensating the increase in length. Okay, length के increase होने की वजह से आपके पास में जितना diameter कम हुआ, that is not completely compensating the length. That's why the final volume will be completely different from the initial volume. ठीक है, जो final volume होगा आपके पास में वो initial volume से different होगा. That's why there are volumetric strains. इसीलिए आपके पास में volumetric strain होते हैं. Okay, so ये आपको ध्यान रखना है. So ये वैल्यूज भी आपको ध्यान रखनी है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया है. They can ask you directly in the exam. Okay, so this is for the metal. Now, is there any case where the initial and final volume will be same? कि जो पहले वाला वॉल्यूम था exactly बाद वाला वॉल्यूम भी उतने रहे. Okay, now let's take for the 0.5 value. Very important. Okay, अब ये इसको देखते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं चाहिए, आप सब कुछ लिखते हुए चलेंगे. Make notes proper. Okay, then I'm using, if mu is 0.5. Okay, if mu is 0.5, then what will happen? Okay, let's write down the volumetric strain formula. This is epsilon x plus epsilon y plus epsilon z here. Okay, and by the definition we are saying there is epsilon y or epsilon z is negative times of mu of epsilon x. Okay,
divided by the Poisson's ratio. Lateral strain are mu times proportional to this one. Mode हम लेके चल रहे, okay? Now, so in this case, I'm saying if epsilon x is 1, okay, then what will be epsilon y? Epsilon y will be minus 0.5. Epsilon z will be minus 0.5. So when epsilon x, when longitudinal strain is 1, then lateral strain in both direction, okay, in height and width, diameter will be twice, okay, diameter क्या आपका इसमें twice हो जाएगा, pi by 4 d square, okay, so in this case the diameter will be twice here. So in this case, this is minus 0.5, this is minus 0.5, so volumetric strain will be 1, then minus 0.5, and minus 0.5 will be equals to 0. Okay, means in this case, when the value of mu is 0.5, then there is no volumetric strain. कोई भी volumetric strain नहीं होने वाला. Initial volume will be exactly equals to, as epsilon v is 0, initial volume will be equals to the final volume here. Okay, initial और final volume आपके इसमें क्या हो जाएंगे? Same हो जाएंगे. So is there any material for which the mu is 0.5? Yes. For pure rubber. For the pure rubber, mu is 0.5. So let's suppose if this marker is of pure rubber. So if let's suppose the volume is initially is V. So if I will try to elongate this one, then the diameter will compensate in such a fashion that is the final volume will be also equal to the initial volume. Okay, because for the pure rubber, mu is 0.5. Okay, अब यहाँ पे कई पॉइंट हो सकते हैं क्या? जैसे कि if mu is 0.5, then volumetric strain is 0. Okay, ठीक है. पहला पॉइंट आपका इसमें क्या है? When mu is 0.5, first point, volumetric strain will be 0. Okay, volumetric strain will be 0. Second, longitudinal strain will not be 0. ये 0 नहीं होगा. Third, lateral strain will not be 0. Okay, lateral strain भी 0 नहीं होगा, longitudinal strain भी 0 नहीं होगा, but volumetric strain आपके इसमें क्या होंगे? 0 होंगे. Okay, so these are the key points you have to keep in your mind when you're talking about the Poisson's ratio and the values of Poisson's ratio. So what is the maximum possible value of the Poisson's ratio? 0.5 that we are defining. Okay, so उसके बेस हमने इसकी बात की. So the minimum value is 0. Okay, what if the longitudinal strain are, so lateral strain are directly proportional to lateral strain? Means मैं कहने sense if there is no negativity, there is no opposite sense. Means क्या हो अगर मैं इसको elongate करने ट्राई करूं और diameter भी elongate करें? Is this possible? If I am trying to elongate this one, then the diameter is also going to change or increase. So this is increasing, this is increasing. Or if I try to compress this one, diameter is also going to be compressed. Diameter भी compress हो. So is there any kind of material possibility like this? क्या ऐसे material हो सकते हैं आपके पास में? Or can we design such kind of materials? क्या हम ऐसे material design कर सकते हैं? Yes, ठीक है. कैसे? आपने कहीं पे आपके किसी फील्ड में फेसबुक या कहीं पे आपने देखा होगा कि देयर आर सम रिंग टाइप्स मटेरियल्स लाइक दिस वन. ठीक है, कुछ रिंग टाइप्स मटेरियल्स हैं कि जब आप उनको ऐसे खोलते हैं तो आपका इन दैट केस द कंप्लीट बॉल इज ओपनिंग, एक पूरी बॉल ओपन हो जाती है. एंड व्हेन यू ट्राई टू पुश दिस वन, पूरी बॉल आपके इसमें कम हो जाती है. सो इट्स ओपन लाइक दिस वन, क्लोजिंग लाइक दिस वन. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स हैं. सो एक्चुअली दीज आर द डिजाइन मैकेनिज्म्स. वो एक मैकेनिज्म की तरह यूज किया गया है. दीज आर डिजाइन मैकेनिज्म्स, डिजाइन मैकेनिज्म्स कि आप इसको इलोंगेट करेंगे तो आप जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करें तो उसकी लेटर डायमेंशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. व्हाट इफ वी डिजाइंड दीज मैकेनिज्म एट नैनो स्केल्स? इन मैकेनिज्म को हम नैनो स्केल पर डिजाइन कर दें, ठीक है, और फिर उससे हम एक मटेरियल बनाएं, कंप्लीट एक बार बना दें. सो नाउ इन दैट मटेरियल ईच पार्टिकल is behaving like this mechanism, okay, and we form a bar like this one. Now when I will try to elongate the bar, then the lateral dimension is also gonna increase. So yes, we can manufacture, we can design these materials if we think properly. Okay, so there is a possibility, but
नेचुरली वी आर डिफाइनिंग, दैट इज नेचुरल सिस्टम में हम डिफाइन करें, म्यूज वेरिएशन इज फ्रॉम 0 to 0.5. ये आपके पास में इसकी वेरिएशन है. ओके, सो आई थिंक द पॉइजन रेशियो इज प्रीटी क्लियर.